Hello guys, welcome back to the Political Science lecture series on Napier. We were discussing Western political thought and we completed Plato last time. Today we're going to discuss the next philosopher who is also very important, that is Aristotle. Aristotle was Plato's student, but unlike Plato, his philosophy was a little different than that of Plato's. और इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे बिकॉज कभी कभी इस पे भी सवाल आ जाता है कि कंपैरिजन बिटवीन द फिलोसफी ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो. बट फर्स्ट वन जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिस्टोटल की फिलोसफी है वो है रिगार्डिंग हिज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट. और जिस तरह हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले एक ब्रॉड tabular form में represent करेंगे about the philosopher to give an impression on the examiner that you are very well versed in the subject. तो again ideology जो है वो larger democratic context में है Aristotle की, that it relates to this larger context of the types of governments and systems. His focus is on political virtue. These are the important events. Before Aristotle के आपका प्लेटो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग था, आपका डेमोक्रेसीज का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था एथेंस में and then it was subsequently overthrown as well. Thomas Aquinas came after Aristotle incorporated his philosophy, so that's how he influenced other people as well. Very late Thomas Hobbes का concept of state of nature develop hota hai, which is also something that we're going to discuss. These are three key important books by Aristotle. Now let's jump to the question. ज़्यादातर इस पे सवाल आता है Aristotle की classification of states पे. तो Aristotle states को 6 बेसिकली डिफरेंट किस्म के में क्लासिफाई करता है. और किन बेसिस पे करता है? ऑन 2 principles. First is the number of people who exercise supreme political power in that state, and second is that what kind of ends does it seek to serve. ये किस किस्म के goals और objectives हैं state के. These 2 basically systems, principles constitute the state that Aristotle devices. This is a very simple classification because अगर तो rulers अपनी community के लिए अच्छा काम करते हैं, if the goal is to serve the larger community, उन states को हम pure या normal state, normal form कहेंगे. अगर rulers selfish हो जाएं and if they are only seeking to serve their own interests, उसको हम perverted या degenerated form of state कहेंगे. तो पहला प्रिंसिपल जो हमने एक डिस्कस किया था, the ends that it seeks to serve. बेसिकली वो ends 2 तरह के हो सकते हैं. एक larger community interest and the second could be personal interest. And second principle was कि number of people who exercise supreme power, तो वो यहाँ पर आएगी. So Aristotle argues that if the power is vests in one person, then it could either be a monarchy or a tyranny. If that one person is governing in the interest of the community and not for his own interest, then it is a monarchy. It is a good state. It is a good system. But if that one person is using political power and state apparatus for his own benefit, then it's a tyranny. Similarly, if there are a few small number of people, ruling class, एक special class है जो कि govern कर रही है in the interest of larger community, then it is aristocracy. This was very famous back then. In the old Greek societies, aristocracies were very common, and aristocrats were people who used to govern. तो ये एक normal, good functioning state है. But if these few people act in their own interests, then it becomes the perverted form of oligarchy. और अगर बहुत ज़्यादा लोग अवामुन्नास हुक्मरान है और अवामुन्नास की मर्जी से फैसला होता है, तो that's a polity. But अगर वो अवामुन्नास सही तरीके से कम्युनिटी के इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं करी मगर डिजेनरेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बन जाती है, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और सिर्फ अपने इंटरेस्ट सीख करने लग जाते हैं, then that becomes democracy. I would like to point out here that the democracy in ancient Greece and the democracy what Aristotle argues is not the kind of democracy that is present in today's world. Greek democracy direct democracy थी जिसके अंदर हर बंदे का पास राइट टू वोट था.
हर बंदा हर लॉ पे पूछा जाता था उस बंदे से कि वो क्या चाहता है. मॉडर्न डेमोक्रेसीज डायरेक्ट डेमोक्रेसीज नहीं है, दे आर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज व्हिच आर आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. आप इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव को मुंतखब करते हैं जो असेंबली में जाके आपके बिहाफ पे लेजिस्लेशन करता है. सो दे आर डिफरेंट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर कंपोनेंट है. If you want to see, you can always check YouTube में difference between direct democracy and indirect democracy. हमने भी अपने lectures में इनको cover किया. I will again attach some video links to that effect as well. Aristotle ने जब पहली चीज classify कर दिया states को, दूसरी चीज उसने ये की कि उसने कहा कि ये सारी चीजें एक खास पैटर्न पे चलती हैं. They operate in a particular cycle. और ह्यूमन हिस्ट्री जो है, हर सोसाइटी की हिस्ट्री, हर सिविलाइजेशन की हिस्ट्री इस साइकिल के थ्रू ऑपरेट करती है. वो साइकिल क्या है? वो कहता है कि सोसाइटी में एनार्की होती है सबसे पहले, तो इट स्टार्ट्स विद एनार्की. और उस एनार्की में कोई एक कैरिस्मेटिक सुपीरियर मिलिट्री प्रोवेस रखने वाला आदमी जो कमांड करता है लार्जर लोगों का इंटरेस्ट, ही इमर्जेस एज अ किंग एंड ही ब्रिंग्स ऑर्डर टू द सिस्टम एंड थस बिकम्स अ मोनार्की एस्टैब्लिश होती है, जो सबसे पहला फॉर्म ऑफ सिस्टम. For some time this works fine, but over time उसके बच्चे होते हैं, next generations आती हैं, they stop adhering to the virtues that their forefathers had used to bring that chaos into order. और आहिस्ता आहिस्ता kings began to exploit the masses, और इस तरह tyranny establish होती है. Over time people become fed up with this tyranny and they do not tolerate this kind of administration any longer. And इसकी वजह से internal push for reform की वजह से कुछ few जो लोग, there are other people in the country who are also powerful, who hold certain level of power, who hold intellect, who hold support as well. These few people over time overthrow this tyranny और एक aristocracy establish की जाती है जिसमें few wise men from good families, good background, good education come to govern the society. ओवर टाइम जिस तरीके से मोनार्की का कैरेक्टर डिजेनरेट कर गया था, इस एरिस्टोक्रेसी का कैरेक्टर भी डिजेनरेट कर जाता है और इस एरिस्टोक्रेसी आपकी ओलिगार्की में बदल जाती है. ओवर टाइम जब एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में बदलती है तो लोग इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर एक पॉपुलर रिवोल्ट होता है. पीपल आर्ग्यू कि ये जो एरिस्टोक्रेसी है, ये जो ओलिगार्की है, दे आर ओनली बेनिफिटिंग द रूलिंग क्लास अलोन. हेंस सिटीजन्स एक रिवोल्ट लेकर आते हैं लोगों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, एंड दे डेवलप अ पॉलिटी कि जिसमें हर बंदे का राइट टू वोट होता है. तो जब तक ये लोग अपने मुफाद से हटकर, ये तमाम लोग कम्युनिटी के मुफाद में फैसले करते रहते हैं, तो आपकी पॉलिटी फंक्शन करती रहती है बेहतरीन तरीके से. लेकिन जब लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, अपने ज़ाती मुफाद के तहत वोट करने लग गए, लार्जर कम्युनिटी के इंटरेस्ट में नहीं करने लगते, तो वो डेमोक्रेसी में डिजेनरेट कर जाती है. अगेन जिस तरीके से एथनियन सोसाइटी में, एंशिएंट ग्रीस में डेमोक्रेसी वाज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, उसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरिस्टोटल यूजेस द वर्ड डेमोक्रेसी एज अ पेजोरेटिव, एज अ नेगेटिव वर्ड. ही अटैचेस नेगेटिव कॉनोटेशन टू डेमोक्रेसी, the democracy that was practiced in ancient Greece, which is no longer practiced in modern world. तो डेमोक्रेसी इवेंचुअली जब डिजेनरेट करती हैं और लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डेमोक्रेसी भी डिसअपीयर करती है. और जब लोग इतना तंग आ जाते हैं अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से, इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस से, then there is again a need for a strong man, authoritative central figure who can bring order to this chaos. और again कोई वॉरियर स्टेट्समैन आता है और कैरिस्मेटिक फिगर आता है और फिर से मोनार्की एस्टैब्लिश करती है और ये साइकिल दोबारा से शुरू होता है. तो इसकी क्या एग्जांपल्स हैं हमें मिलती विच वी कैन रिमोटली कनेक्ट. तो कुछ ऑब्वियसली फुल फ्लेज तो हमें नहीं मिलती, लेकिन देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच वी कैन कोरॉबरेट विद दिस. तो हिस्ट्री ग्रीक की सिटी स्टेट्स में ये मिलता था बहुत दफ़ा, जिसकी वजह से एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन की. मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें इसकी कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं कि जब सोसाइटी में अनार्की आती है तो पीपल वेलकम या एक अथॉरिटेटिव रूल जो है वो लाया जाता है टू रिस्टोर ऑर्डर. पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगा,
इजिप्ट में मार्शल लॉ लगा, टर्की में लगा, बर्मा में लगा, तो आप वो सारी एग्जांपल्स इससे कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है which is a more technical, which is also more nuanced analysis, जिसके आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा, that is relating to President Donald Trump. It's a wonderful article that argues that the rise of Donald Trump is explained by this political cycle, कि कैसे democracy establish हुई US में, too much democracy, too much devolution of power, too much civil liberties eventually created chaos, और system dysfunctional होना शुरू हो गया उसकी वजह से. Hence there was a need for a central strongman figure, और लोग because of that anarchy और वो उनके interest represent नहीं हो पा रहे थे, they wanted a strongman figure जो कि populist demagogue आके तो कहे कि I can fix everything, and that resulted in the election of President Donald Trump. So do read that article, you can incorporate that. उसकी थोड़ी सी जस्ट आप अपने क्वेश्चन में एग्जांपल्स के अंदर कर सकते हैं, argue that will give you phenomenal edge over other candidates. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा मैं एंड पे फ्लो चार्ट आपको दूंगा फिलॉसफी को करने का, तो एरिस्टोटल की फिलॉसफी के मुताबिक पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म हाउसहोल्ड्स, विलेजेस एंड देन फॉर्म सिटीज. फॉर अ गुड लाइफ यू नीड टू develop or need to organize city states, because Aristotle की वो बहुत famous quotation है ना, man is a political animal. So Aristotle basically argues कि इंसान political system के अंदर रहते हुए एक इंसान बन सकता है, कि जो इंसान political system में किसी operate नहीं करता, वो या तो either he is a supernatural person or he's a beast, because इंसान की basic instinct है कि वो they form collectivities and then he organizes, और उसमें एक system बनता है, laws बनते हैं. तो एक इंसान की बेहतर जिंदगी हमेशा एक organized city state की form में ही exist कर सकती है, where there are functioning laws. Living in a society organized by reason, laws such as city state is what makes us human. Anybody who lives outside the city is either a beast or a god. Man hence by nature is a political animal. ये उसकी बड़ी फेमस कोटेशन है जो कि यूज होती है, और दैट इज व्हाई ये दिस आल्सो कोलैबोरेट्स with his larger philosophy of realism, that Aristotle is a realist. He believes in real world phenomena, unlike Plato who believed in lofty ideals. तो Aristotle की legacy क्या थी? Aristotle was known as the first teacher, especially in the Muslim world. Muslim world के अंदर philosophers उससे बहुत inspired थे. They were known as Aristotelian philosophers. तो बहुत सारे इब्न रुश्द, इनमें एक बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक philosophers में. तो in the golden age of Islam, it was golden age because इनमें से बहुत सारे philosophers ने Greek philosophy, Islamic philosophers ने Greek philosophy, in particular Aristotle की philosophy की incorporate किया अपने अंदर, और उस पर research किया and built upon that brought in the golden age of Islam. और ये कहा जाता था कि जब इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर in that golden age के पीरियड में, when there was a conflict on a point of subject between two different people or two different philosophers, they used to resolve that dispute by discussing और checking कि इस पे एरिस्टोटल का क्या ओपिनियन था, और जो एरिस्टोटल का ओपिनियन होता था उस पे वो डिसाइड करते थे कि ये ओपिनियन ऐसा है या वैसा है. That was the magnitude of impact on Aristotle. एरिस्टोटल के आने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, दुनिया में ऑक्यूपेशन होती है, ग्रीक फॉल्स, द ओवर रोमन एम्पायर की आपकी ऑब्वियसली यूरोप डिसेंड्स इनटू डार्क एजेस आफ्टरवर्ड्स. तो कुछ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ग्रीक फिलॉसफी जिंदा रहती है बट यूरोप में नहीं रहती. तो एरिस्टोटल के बाद मिडिल एजेस से लेकर रेनेसांस तक, जब रेनेसांस के टाइम पे आके दोबारा एनलाइटनमेंट एज के अंदर यूरोपियन philosophers और writers takes their interest in Aristotle and Aristotle's philosophy, then they rejuvenate that philosophical thought, और scientific age और an age of enlightenment उसकी वजह से शुरू होती है. बट उस पूरे 1000 साल के पीरियड में एरिस्टोटल से एनलाइटनमेंट तक कोई इतना बड़ा फिलोसोफर नहीं आता जितना एरिस्टोटल था, और एरिस्टोटल के आइडियाज उस पूरे 1000 साल तक चैलेंज भी नहीं होते. सो एरिस्टोटल वाज अ ह्यूज फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड. तो ओवर टाइम एरिस्टोटल की फिलोसफी को रीडिस्कवर करके मिडिल एजेस के एंड पे एनलाइटनमेंट आती है यूरोप में, और फिर उस पर क्रिटिक भी शुरू होती है, फिर उसको उसके कुछ आइडियाज को
निगेट भी करना शुरू किया जाता है. तो ओवर टाइम देयर वाज नथिंग इन एरिस्टोटल्स फिलॉसफी इन टुडेज वर्ल्ड दैट इज एक्सेप्टेड एज राइट. एवरीथिंग दैट एरिस्टोटल सेड, एंड ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, इवेंचुअली प्रूव टू बी रॉन्ग, बट इट वाज फाउंडेशन, क्योंकि उस फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए लोग आगे गए और उस पर क्रिटिक की. सो दैट वाज एरिस्टोटल्स लेगेसी. ये मल्टीपल पॉइंट्स के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में कैसे, रेनेसांस में कैसे उसकी फिलॉसफी को यूज़ किया गया, और कैसे कितने अरसे तक एरिस्टोटल वाज यूज्ड एज अ फिलोसफी जो कि रिजॉल्व कर सकती थी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन को. क्रिटिक एरिस्टोटल की फिलॉसफी की क्या है? वेरी क्विकली एंड वेरी सिंपली, people have argued, academics have argued that his qualification and classification is unscientific. इसकी कोई scientific basis नहीं है. It's just a very एक बहुत ही word play के साथ एक बस एक philosophical justification दी हुई है इस classification की. Aristotle does not distinguish between state and government. वो इन दोनों को एक ही तस्वुर करता है, जबकि state, हमने जिस तरह in our earlier lectures of political science discussed that state or those institutions or the rules with which a country is governed, and government are the people who come to occupy that power. But Aristotle does not make any such qualification. No wonder, because that this classification is a modern political concept. Hence, the critique is also modern. Aristotle's classification does not cover all modern forms of government. For instance, theocracy. Theocracy is a form of government जिसके अंदर clerics, जो religious clerics हैं, वो रूल करते हैं. For instance, ईरान है जैसे. तो इस तरह की क्लासिफिकेशन में एग्जिस्ट नहीं करती जगह उसकी. तो उसकी जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन के, दे डोंट कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी, जिस तरह हमें मॉडर्न वर्ल्ड में हम बात करते हैं कि इज नॉट अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो बट जो एरिस्टोटल के टाइम पे एनार्की डेमोक्रेसी की वजह से हुई थी, उसकी वजह से उसकी फिलोसफी इन्फ्लुएंस थी. बट दैट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस. इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते. एरिस्टोटल साइकिल डज नॉट फिट विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट. तो जो उसकी एप्लीकेशन थी एरिस्टोटल की फिलोसफी की, वो एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम पे ही अप्लाई करती है. मॉडर्न स्टेट्स में ये ट्रेंड नहीं देखते कि वो बिल्कुल एक जो नीट पैटर्न एरिस्टोटल बताता है कि पहले मोनार्की से आपकी टिरेनी और फिर एरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की और ओलिगार्की से पॉलिटी और पॉलिटी से डेमोक्रेसी और मोनार्की, ये ज़रूरी नहीं है. मॉडर्न स्टेट में हमने देखा है कि वो बड़ा बड़ा जंप भी लगता है, लॉजिकल लीप्स आते रहे हैं उसके अंदर. जिस तरह फॉर इंस्टेंस मोनार्की के बाद आपकी टिरेनी आनी चाहिए, लेकिन रशिया के अंदर उसके मोनार्की के बाद डायरेक्ट डिक्टेटरशिप आ गई ऑफ अ फ्यू कम्युनिस्ट पार्टी की. तो वो जो मोनार्की के बाद डायरेक्ट ओलिगार्की आ गई. इसी तरह जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मोनार्की के बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी से मेरा मतलब कि मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी आ गई. वो बीच वाले जितने स्टेप्स एरिस्टोटल ने बताए वो स्किप हो गए. तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, दे आर नॉट कवर्ड अंडर एरिस्टोटल्स थीम, व्हिच इज फाइन बिकॉज ही वाज राइटिंग वे बैक, नॉट इन मॉडर्न वर्ल्ड. बट nonetheless it's an important critique that we should know that Aristotle की philosophy is not applicable in the modern times. Also मेरी sequencing में थोड़ा सा मसला है, so you can fix that yourself. So this is point number 4, this is 5, this is 6, 7, 8, 9. So there are 9 points of critique. There is no place of mixed forms of government in Aristotle's qualification. कुछ mixed forms भी होती हैं जिनके अंदर दोनों का एलिमेंट आता है जो उसने डिस्कस की हैं. अगेन जैसे मैंने बात की है कि थियोक्रेसी वगैरह इसके अंदर कवर नहीं होती. एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में कोई डिस्टिंक्शन मॉडर्न टाइम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज पीपल, a few people governing for larger interests. क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक दौर में रहते हैं और ये समझा जाता है कि एरिस्टोक्रेसी रूल बाय अ फ्यू इंटेलिजेंट हाईली एजुकेटेड मैन का मतलब है कि आप ओलिगार्की ही बना रहे हैं, बिकॉज आपकी दुनिया में डेमोक्रेटिक आइडियल है कि हर बंदे को राइट इख्तियार होना चाहिए. तो एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की की डिस्टिंक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में इररेलेवेंट है. जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी एंड एक्सक्लूजन ऑफ विमेन, एरिस्टोटल ने जस्टिफाई किया था स्लेवरी को और एक्सक्लूजन ऑफ विमेन फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेस, उनको वोटिंग का इख्तियार ना देने का को एडवोकेट करता था, which is again a very regressive idea. It's not a progressive idea in modern world. This is not appreciated. So that's all on Aristotle. In the next lecture we'll cover the differences in the philosophy of Aristotle and Plato. See you guys next time.